Hello and a warm welcome to South Asia Today, where we bring you in-depth insights into the key events shaping South Asia. I'm Shivangi Mishra, and on today's top stories. India's Punjab citrus boom signals shift to sustainable farming. Yokohama city shines in winter with acclaimed illumination art. And POGB faces growing unrest as caretaker cabinet fails to stem governance collapse. Let's begin the show. India has placed significant emphasis on alternative farming, encouraging farmers to adopt progressive practices and explore more profitable ventures. Across the country, many farmers have embraced horticulture, cultivating a variety of fruits suited to local climate conditions. Today, we take you to Punjab in North India, where quinoa, a citrus food, is emerging as a sustainable and profitable farming option for farmers. Quinoa, a juicy, seed-rich citrus fruit, is cherished for its sweet tart flavor, vibrant color, and rich vitamin C content. During the winter season, vast fields across the southwestern part of Punjab, especially in Fazilika, Abohar, and Sri Muktasar Sahib, transform into a dazzling sea of orange, painting the landscape with the promise of prosperity. The state produces around 1.21 million metric tons of quinoa annually from nearly 48,000 hectares, achieving a high productivity of 23 to 24 metric tons per hectare. इंडिया में आंध्रा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, केरला जाता है, कर्नाटका जाता है, तमिलनाडु जाता है और करीब 500 गाड़ी का काम करते हैं हम और 40 साल से काम कर रहे हैं। किन्नू की मार्केट बहुत बढ़िया है इंडिया के अंदर। We visited Badal village in Sri Muktasar Sahib district, a key part of Punjab's horticulture-led transformation. At Badal farms, fields once dominated by water-intensive crops have given way to flourishing quinoa orchards. Well suited to Punjab's semi-arid climate, quinoa requires far less water than paddy, making it a sustainable choice. During the harvest, workers carefully handpick ripe fruits to preserve quality. The quinoas are then processed on site, washed, dried, waxed and graded, enhancing shelf life, reducing wastage and opening access to wider markets across the country. हम कई साल से इसमें अपना काम चलाते हैं, जो कि अंदर पैकिंग होता है माल। पहले उसको वैक्स करते हैं, वैक्स करके ग्रेडिंग करके उसको अलग अलग पैकिंग करके अलग अलग स्टेशन पे जाता है, जैसे कि बेंगलोर ज़्यादा, आंध्रा में, कर्नाटका में, और भी पैकर भी हैं यहाँ पर काफ़ी, उनके साथ हेल्पर भी होते हैं और यहाँ की पंजाब की लोकल लेबर भी आती है। Once graded, premium quality quinoas are carefully packed, labelled and dispatched from Punjab to markets across India, catering to strong seasonal demand. This shift towards quinoa cultivation has not only boosted farm incomes but also created local employment, giving fresh momentum to the rural economy. डेली ਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕਰ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। Punjab's quinoa success story reflects a shift towards smarter, sustainable farming.
From orchards to markets across India, this citrus revolution is improving farmer incomes, creating rural jobs, and proving that horticulture can be a viable alternative to water-intensive agriculture. From Japan to India, cities and industries are transforming through innovation and vision. Yokohama dazzles visitors this winter with its acclaimed illumination art, earning recognition as one of Japan's leading night view destinations. Meanwhile, in India, Yamato Logistics strengthens transportation infrastructure with the launch of a major logistics hub in Haryana, supporting growth, connectivity, and the evolving demands of a global economy. Yokohama shows attractive scenery in 4 seasons. Especially in winter, Yokohama holds fantastic and dynamic illumination show Yorunoyo. It is accelerated by clean and transparent air condition. It was highly evaluated and nominated to Japan's major night scenery. 都市型の夜景っていうところで新三大夜景都市に選出されたっていうことで、赤レンガとか歴史があるですね三軒ですとかそういったところのライトアップっていうところが今回の選定の評価につながったと感じております。多くの方々にですね横浜の夜景を楽しんでいただけるよう尽力していきたいと考えております。夜の夜は横浜のナイトタイムエコノミーの活性化に寄与することを目的として始まった事業となります。ハイライトオブ横浜なんですけれども、横浜の街が光と音楽で連動する5分間のスペクタクルショーとなっております。今年度は過去最大の46施設が参加となりました。大桟橋会場では会場の名前をクジランドと名付けまして、25メートルにも及ぶ雄大なクジラのプロジェクションマッピングが投影されます。こちら国内最大級の屋内プロジェクションマッピングとなっておりまして、見るだけではなく体験ができるプロジェクションマッピングとなっています。山下公園会場では花をモチーフにした光のオブジェを設置いたしまして、全長250メートルにも及ぶインタラクティブデジタルアートを展開しております。時間になると花が開くような様子もお楽しみいただけます。またですね、そのオブジェの周りを人が歩くとですね、その人の動きに反応した光の演出などもありますので、こちらでも光と遊ぶような不思議な体験ができますので、ぜひお楽しみいただければと思います。やっぱり大桟橋からの夜景がすごい素敵でしたね。夜景とあとこのプロジェクションマッピングのコラボがすごくマッチしてて、すごく綺麗だなっていうのがもう一番の印象です。日本で一番綺麗だなと思いました。Yokohama has long history enriched by development of culture and business. To the future, Yokohama will increase its charm continuously to satisfy citizens and visitors from all over the world. One of the key elements of Indian economy's growth is transportation. Prosperity of city center is expanding to suburb area. Yamato Logistics India contributes to transportation among city and suburb area. Nearby highway in Haryana state, big logistics center was launched. 当社グループはですね、宅急便を中心に、約法人顧客180万社おりまして、インドだとしても日本の品質を維持したままですね、オペレーションを提供させていただいている。海外原稿としてもですね、最大級のロジスティックセンターをハリヤナ州のシダラワリというところに設置をいたしました。インドはですね、製造業が成長しておりまして、OEM メーカーさんもそうですし、サプライヤーさんも生産拠点を増強されていると。インドというのはグローバルの中でも成長領域、成長国という認識をしておりまして、やはりお客様のニーズに対して積極的に投資を行って、今回のロジスティックセンターですとか、あるいは輸送のネットワークですとか、こういったところを拡充していくという戦略を持ってやっております。Especially designed for temperature controlled equipments, and we can store electronics and pharma equipments. Japanese believe in training, and we at Yamato, any new people joining our team are put on 21 days training, and we impart them safety, 5S, ORENSO training. I feel really excited to work with Yamato Logistics India
because in Japanese way of working, we believe in kaizens, 5S, safety and teamwork. インドから中東であったりアフリカであったり、これからの地域ですねへの製品供給拠点としても成長するというふうに思っています。そこに対して我々はインド国内のみならずそういったエリアも含めて拠点を先行して開設をして国際物流あるいはそういった国の中での物流のご支援をさせていただきたいというふうに思っております。Japanese manufacturing policy is shared with Indian local employee to confirm real Make in India. It is the dawn of international distribution network. Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. A gas cylinder explosion destroyed a home in Islamabad last week, killing 8 people, including a newly married couple and injuring more than a dozen, police and rescue officials said. The blast, caused by a gas leak, occurred at approximately 7:20 a.m. local time as wedding guests and family members slept inside. The force of the explosion collapsed the roof and blew out sections of the walls, leaving casualties trapped under rubble and debris strewn across neighboring properties. Emergency services confirmed the deceased included the bride and groom, who had celebrated their wedding the previous day. 6 other guests and family members also died. At least 12 injured individuals were transported to local hospitals. Gas cylinders are widely used for cooking and heating in Pakistani households and have been linked to previous deadly accidents due to leaks. Protesters outside the Iranian embassy in London chanted anti-government slogans and burnt images of Iranian flags in a show of support for protesters in Iran facing a government crackdown. Iran's leaders are facing fierce demonstrations that evolved from complaints about dire economic hardships to defiant calls for the fall of the deeply entrenched clerical establishment. But despite the massive scale of the protests, there are no signs of splits in the Shiite clerical leadership, military or security forces, and demonstrators have no clear central leadership. Iran has not given an official death toll, but blames the bloodshed on U.S. interference and what it calls Israeli and U.S.-backed terrorists. State-run media has focused attention on the deaths of security forces. The protests began in response to soaring prices that have worsened daily hardships, before turning against the clerical rulers who have governed for more than 45 years. India's Adani Enterprises plans to aggressively bid for 11 airports that the federal government plans to lease to the private sector, as part of the company's $11 billion expansion strategy for airport infrastructure over the next 5 years. Billionaire Gautam Adani-led conglomerate has embarked on an expansion spree in recent years, with its airport subsidiary becoming the largest operator in India by number of airports. India's other major aviation player, the GMR Group, is the largest operator by number of passengers handled. The Indian government is leasing out government-owned airports for long periods to private players while incentivizing building new ones. It plans to have 350 to 400 airports by 2047 from 163 currently. Earlier this year, New Delhi outlined plans to lease out 11 airports, including at Amritsar and Varanasi. Adani Airports manages 7 airports across India and is set to operationalize the first airport it has built from scratch, a new airport near Mumbai, this month. About 174 million passengers traveled from and within the South Asian country by air in 2024, 10% more than a year ago, data from the International Air Transport Association showed. Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan is witnessing deepening unrest as frustration against governance failures spills onto the streets. People, especially the youth, are protesting what they call repeated betrayals and false promises over a truly neutral caretaker cabinet. After weeks of delay and political maneuvering, former power players were brought back, leaving young stakeholders ignored once again. This growing anger reflects a region tired of being sidelined and demanding transparent decisions, fair representation, and genuine accountability from those in power. Tension continues to rise across Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan as residents voice their anger over what they describe as a complete breakdown of governance. Demonstrations have intensified after the long-awaited caretaker cabinet
fail to reflect neutrality or youth representation. Protesters say the inclusion of familiar political faces signals yet another cycle of unfulfilled promises. With public trust eroding and young people feeling increasingly excluded, the region now stands at a critical moment, demanding clarity, fairness, and real leadership. आप सबको मालूम है पिछले एक महीना 10 दिन से हम मुंतजिर बैठे हुए थे। निगरान काबीना फाइनल होने जा रही थी। आज होगी, कल होगी, एक लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई। इसमें सबसे ज्यादा मुज़ाहमत, इसमें सबसे ज्यादा आवाज उठाई गिलगित बल्तिस्तान की कौम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के अपने नौजवानों के आने वाले कल को सिक्योर और महफूज बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान यूथ मूवमेंट ने। आज एक महीना 10 दिन के बाद निगरान काबीना फाइनल हो चुकी है, मगर बदकिस्मती हमारी यह है कि हम बेशऊर लोग हैं इस वजह से कि हमें फिर से दोबारा नजरअंदाज किया गया और दोबारा से साबिका मिनिस्टर्स को लाया गया, दोबारा से सियासी जमातों के इन्फ्लुएंसर्स को इस कश्ती में बिठाया गया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 17-18 लाख की आबादी में 7.5 से 8 लाख जो यूथ स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से किसी एक को भी नहीं लिया गया। Voices from POGB are growing sharper as people openly acknowledge the hardships and broken promises they have endured. Many say the government's repeated failures have already destroyed them, yet they refuse to be pushed further into despair. This rising awareness is turning into collective resistance, with citizens asserting they will no longer accept decisions made without transparency or concern for their future. The public now stands determined to protect what remains and prevent further damage. ये इंतहाई मुस्तरद की जाने वाली काबीना बनाई गई है। हम इसको मानने को तैयार ही नहीं है। चंद नाम मैं यहां लूंगा, 2 कोऑर्डिनेटर्स, 12 मिनिस्टर्स समेत टोटल 14 हायर किए जा चुके हैं। इस तरह कोई यहां पीपल पार्टी का है, कोई नून लीग का है, कोई अवामी लीग का है, कोई किसी और जमात का है। इसी समय बाकी हम तहकीक में लगे हुए इन 14 में से कौन ऐसा है जो न्यूट्रल है, कौन ऐसा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। गिलगित बल्तिस्तान की कौम, आप अगर इस निगरान काबीना के मामले में न्यूट्रल रहे, आपने हर मामले की तरह इसको भी परे करो, दफा करो, छोड़ दो कहोगे, यकीन जानो आज यही हम अगर बाशऊर हो चुके हैं, हम सियासी तौर पर इतने मैच्योर हो चुके हैं, तो हमें इसके खिलाफ रद्द अमल देने की जरूरत है। हम एक हुए तो हुसैन की इनकार की तरह डटे रहेंगे। हम कबूल करने वाले नहीं हैं। हम नजर खरीद कोई गुलाम है, न कोई जहनी गुलाम है कि आप लोगों के जो मन मर्जी के फैसले हों हम तस्लीम करते रहे। हम तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, मजीद तबाह और बर्बाद होना नहीं चाहते। गिलगित बल्तिस्तान की कौम, अगर आप लोग आज खामोश हुए तो कल को खुदा गवाह है, नाम ही मिट जाएगा, आपका नाम निशान तारीख में नहीं रहेगा। Across POGB, the youth are expressing deep frustration over years of exploitation and neglect, from broken roads and weak infrastructure to inadequate healthcare and failing education systems. They say their lives have been shaped by constant struggle. The final blow, many argue, is the newly announced caretaker cabinet, which once again excludes genuine youth representation. With worsening conditions and no meaningful reforms in sight, young people are now demanding real change, accountability, and a future that reflects their voice. Jammu and Kashmir is unfolding as a true winter wonderland this season. Sonmarg, draped in fresh, glistening snow, has transformed into a breathtaking fairy tale landscape. Tourists from across the country are arriving in large numbers to experience its pristine surroundings, serene beauty, and enchanting winter charm. With each snowfall, Sonmarg reaffirms its place as one of India's most captivating and magical winter destinations. In Jammu and Kashmir, the winter charm of Sonmarg is on full display as the region transforms into a stunning snow-laden paradise. Majestic peaks, frozen streams, and pine-lined slopes create a mesmerizing setting. Visitors from across the country are enjoying sledging, pony rides, snow walks, and scooter rides while capturing unforgettable moments.
Sonmarg's winter landscape continues to offer a perfect blend of natural beauty, adventure, and memorable experiences. बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्नोफॉल कहीं पे नहीं मिला। सिक्किम में गए, हिमाचल प्रदेश में गए, बट कश्मीर इज़ बेस्ट। कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं। कश्मीर के लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। सब कश्मीर को न्यूज़ में, रील्स में गलत बोल के रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। कम टू द रियलिटी, और रियलिटी चेक करना चाहिए कि कश्मीरी कितने अच्छे हैं। और ये जो है ना, क्यों स्विट्ज़रलैंड जाएं, क्यों? वाई टू गो स्विट्ज़रलैंड व्हेन यू गेट द स्नो इन सोनामार्ग? Sonamar, Kashmir, best. Winter tourism is breathing new energy into Sonmarg as cheerful voices and festive vibes fill the surroundings. The growing number of visitors has led to bustling hotels, guest houses, and markets, creating fresh opportunities for local livelihoods. From hospitality to small businesses, the seasonal rush is giving a strong push to the regional economy, highlighting how tourism continues to play a vital role in supporting development across Jammu and Kashmir. जी, मैं आया हूँ कश्मीर इस पहली बार। बहुत मज़ा आ रहा है स्नोफॉल देखते हुए। आप लोग आओ यहाँ पे, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली भी है, ये भी है, सब कुछ है हम लोग के साथ में। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेफ है यहाँ पे। सब पूरा टूरिस्ट सब सेफ है। कश्मीर को पीपल को हम लोग बहुत अच्छा है, जो हाइजीन बहुत अच्छा है। यहाँ का जो वातावरण, बातचीत, ये लोग आप बात का लहजा जो है ना, वो आपको झुकने नहीं देगा। Visitors arriving in Sonmarg are finding moments of calm amid the snow-clad surroundings, breathing in the fresh mountain air, and admiring sweeping alpine vistas. The winter setting invites both thrill seekers and peace lovers, offering space for quiet reflection as well as outdoor excitement. This balance of serenity and exploration makes Sonmarg a standout winter destination, showcasing the timeless natural beauty of Jammu and Kashmir. आजकल सोनमर्ग में बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। देश के मुख्तलिफ स्टेट से टूरिस्ट भी आना शुरू हो गया। हम इनके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्विट्ज़रलैंड से बेहतर यहाँ है। अपना स्विट्ज़रलैंड है, आप उसको छोड़ दीजिए, यहाँ आइए और इसको देख लीजिए, ये कितना खूबसूरत है। आपको दिल नहीं करेगा वापस जाने के लिए। मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ दिल से, आप आइए, कश्मीर देख लीजिए, कितना खूबसूरत है। This winter spectacle in Sonmarg reflects not only nature's magnificence, but also the overall development taking shape across Jammu and Kashmir. The J&K administration deserves praise for ensuring strong security arrangements, improved infrastructure, and smooth tourist facilitation, allowing visitors to explore the region with confidence. These consistent efforts highlight visible progress on the ground, reinforcing Jammu and Kashmir's image as a safe, developing, and welcoming destination for tourists from across the country. As we wrap up today's episode of South Asia Today, we thank you for joining us. We'll return next week at the same time with more insights and updates. This is Shivangi Mishra signing off on behalf of our entire team. Until then, stay safe and goodbye.